Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare हरे कृष्ण। तन प्रणाम आप सभी भक्तों को। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टडीज ऑफ भक्ति, और ये लेक्चर लेने वाले हैं हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी। लेकिन उससे पहले हम कुछ भगवता श्लोक रिसाइटेशन करेंगे। तो भगवता श्लोक रिसाइट हम करेंगे चैप्टर 4 से। और मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, हरे कृष्णा। सो आज हम 19 वर्स तक हम रीडिंग करेंगे, मतलब रिसाइट करेंगे श्लोक्स को। और आफ्टर दैट हम संडे को बाकी के श्लोक रिसाइट कर दिए जाए, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसके श्लोक एक बार में कवर नहीं। तो आई विल स्टार्ट द रिसाइटेशन। हरे कृष्ण। चैप्टर 4 ट्रांसजेंडरल नॉलेज। श्री भगवान उवाच इदं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान्मन्वने प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगे नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मया मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः ह्यः देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः
अकर्मश्च बहुधव्यम गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत् यस्य सर्वे स्मारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुं पंडितम बुधः। हरे कृष्ण। सो आज हमने 19 श्लोक तक रिसाइट किया और बाकी के श्लोक हम कल रिसाइट करेंगे संडे वाली क्लास में। तो now we will welcome Madhav Murari Prabhuji in our session. तो मैं प्रभु जी का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रभु जी का जो प्रोफेशनल नेम है, प्रभु जी का जो रियल नेम है वो है मैखल मिश्नने, और प्रभु जी रशिया से हैं और प्रभु जी ने उधर अपनी लॉ की डिग्री ली है फ्रॉम एन एकेडमी। सो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं और प्रभु जी हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के शिष्य हैं। हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम बैक प्रभु जी। Hare Krishna. Nice to see all of you. So who is the translator? Prabhuji, I will be the translator. Okay, so very nice to see all of you. Okay, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी को बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। Today we are going to discuss Sadhu Sangha as the next stage of development in devotional service. The first one was Shraddha. तो अब हम साधु संघ के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमने पहले किया था वो था श्रद्धा। Can you make me a host? Okay, प्रभु जी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra Jai, Gaura Bhakta Vrinda. So this verse from Shri Chaitanya Charitamrita explains the nature of Sadhu Sangha. तो ये जो अभी हम श्लोक पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से, ये साधु संघ के बारे में बताते हैं। Sadhu Sangha is association with devotees in mood of service. साधु संघ का अर्थ है भक्तों का संग लेना, सेवा रूप। It is our natural position to Krishna, that we are parts and particles of Krishna, and it is our natural position regarding toward devotees of Krishna, that we are their servants. तो जैसे कि हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है कि हम भगवान कृष्ण के पार्षद है, भगवान कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, वैसे हमारे एक स्वभाव है कि हम जो भक्त हैं उनके सर्वेंट हैं, उनके दास हैं। At least if we want to progress spiritually, we should accept this position. We should accept the position of service to devotees, and devotees can be senior devotees, junior devotees, those who are on equal level, and to these different categories of devotees, our service we perform in different ways. तो अगर हमको भक्ति में प्रगति करनी है तो हमको अपने संघ पे ज्यादा महत्व देना चाहिए, और संघ कैसा भी हो सकता है, सीनियर डिवोटीज का हो सकता है, जूनियर डिवोटीज का हो सकता है, और हमको बस डिवोटीज का संघ लेना है जो कि काफी महत्वपूर्ण है भक्ति में। So here this verse from Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:83 says, Krishna Bhakti Janmamula Haya Sadhu Sangha, Krishna Prema Janme Tenho Punah Mukhya Anga, which means the root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. तो इस श्लोक में चैतन्य चरितामृत में हमें इस श्लोक में जानने को मिल रहा है कि जो भक्ति में सेवा है उसका जो रूट कॉज है वो है भक्तों का संग लेना, और
अगर ये कृष्ण भावना में जागृत हो भी जाती है तो भी भक्तों का संग एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है जागृत होने के बाद। So sadhu sangha, it is like a water. With this water, we can make bhakti lata bija grow. तो यही साधु संग है जो हमारे जो भक्ति लता बीज है हमारे अंदर उसको उसी ग्रोथ में हेल्प करता है। And there is a Bengali proverb. Maybe you can quote this proverb in this Bengali language, if you know Bengali language, or maybe it is Hindi proverb. It takes a village to raise a child. Sorry, Prabhuji, can you repeat that, Prabhu? It takes a village. It takes a village to raise a child. Understand? No, Prabhuji, it takes a village. Village. Yes, village to raise a child. Are you So, getting Prabhuji, the I point? don't know, it's Bengali. Okay, then just translate in Hindi. Okay, Prabhuji. So, Prabhuji कह रहे हैं कि it's Prabhuji, I don't know how to translate that. It takes a village to raise a child. It means that in order to grow up a child, the efforts of all inhabitants of this particular village where this child is born, all these efforts are needed. Now you understand? जी प्रभुजी। तो प्रभुजी कह रहे हैं कि एक जो जन्मा हुआ बच्चा होता है उसके उसी ग्रोथ के लिए जो गांव के जितने भी लोग होते हैं उन सबका भागीदार होना बहुत जरूरी है, वो उसकी हेल्प करते हैं उसी ग्रोथ। For example, if we will remember our own childhood, we can see that it is not only our parents, father and mother helped us to become a personality which we are now, but other people also helped, some neighbors, some friends, and so on, different relatives. तो हमने भी देखा होगा कि जब हमारा बचपन होता है तब सिर्फ हमारे माता और पिता ही नहीं बल्कि हमारे नेबरहुड के और हमारे बाकी पड़ोसी वो सब भी हमारी हेल्प करते हैं हमको ग्रो करने। So the same way, His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj was used to say that spiritual life, it is not just spiritual master and myself. There is a big spiritual family which is called ISKCON, and we can get this spiritual nourishment and help and inspiration from different devotees, from very different devotees, as much as it is possible. We don't have to restrict ourselves in this sense. तो परम पूजनीय भक्ति स्वामी महाराज जी का कहना है कि ये जो हमारी भक्ति है तो भक्ति में सिर्फ ये संबंध नहीं है हमारे आध्यात्मिक गुरु और हम में, ये बल्कि एक परिवार है इस्कॉन का। तो इस्कॉन का ये जो परिवार है इसमें सभी भक्तों का संग मिलना ये बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। Also, we get the most important spiritual instructions for our life from spiritual master, and the main direction he shows us in this life, but what it doesn't contradict to this direction, we can freely get from other sources within ISKCON, from other devotees who are in ISKCON, in International Society for Krishna Consciousness. तो जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु से सुनते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस और जो भी वो आदेश देते हैं उनका हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम उन सभी चीजों से जुड़ते हैं जो कि उस फैमिली को बिलोंग करती है, इस्कॉन की फैमिली को, और उनसे हम उनका संग प्राप्त करते हैं। So here in this verse from Madhya Lila 22.83, it is said that association with devotees is still most essential even when this dormant love for Krishna awakens. And it is also natural. It is very natural. For example, our parents, they help us in our childhood to become people who we are now. Yes. So, but after we became adult, it is not that we reject our father and mother, and it is not that we reject the society that helped us to become people like who we are now. We don't reject them. तो
जैसा कि इधर चैतन्य चरितामृत में श्लोक में बताया है कि जब कृष्ण भावनामृत किसके अंदर जागृत हो जाती है तब भी भक्तों का संग लेना बहुत उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि हमें भी हमारे माता पिता ने पाला है, हमें पड़ोसियों ने पाला है, लेकिन हम अपनी सोसाइटी का रिजेक्ट नहीं करते एडल्टहुड अटेन करने के बाद। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उनको रिजेक्ट नहीं करते, हम अभी भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं। Maybe we become more mature and more conscious in our relationships with parents and other people, but relationships are still there. हो सकता है कि हम थोड़े मैच्योर हो जाए हमारे रिलेशनशिप में, हमारे संग में, जो कि हमारा अपने माता पिता और पड़ोसियों के साथ है, लेकिन तब भी हम उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। But anyway, there are some basic ideas, basics, some ABCs of spiritual life of this Vedic culture. It is presented in Srimad Bhagavatam. We are going to discuss it. Now, what are the basics of these relationships between devotees? तो कुछ भक्ति में कुछ एबीसीज होते हैं, एबीसी जो कि हमें श्रीमद् भागवतम से जानने को मिलते हैं कि क्या हमको एबीसी फॉलो करने पड़ते हैं। So the first instruction is given by Narada Muni, who is one of the 12 Mahajanas. Mahajana means the authority in science of Bhakti. तो हमको कुछ उपदेश जानने को मिलते हैं नारद मुनि से, जो कि 12 महाजनों में से एक है, तो उनसे हमको काफी कुछ जानने को मिलता है श्रीमद् भागवतम से। So this verse is quite important for spiritual life, 4, 8, 34, because these three categories of devotees who are seniors, juniors, and those who are on equal level, they are mentioned here, and the instructions are given how to deal with different categories of devotees. तो इस श्लोक में हमको पता चलेगा कि डिफरेंट कैटेगरीज जो भी डिवोटीज की हैं, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, या फिर कोई अभी अभी जैसे ही प्रवेश किया है, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, तो ये हमको इस श्लोक में पता चलेगा। Because we need knowledge which will help us to get more benefit from this association. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमको इसको फॉलो करके ही इस जो एसोसिएशन है इससे हमको लाभ मिलता है। So verse goes like this: every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate toward him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. ओके, तो इधर अनुवाद में बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी क्वालिफाइड पर्सन अपने से मिलता है तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, और अगर किसी को कम क्वालिफाइड पर्सन मिलता है तो भी उसको दया भावना से उस पर कृपा करनी चाहिए, मतलब उसको संग देना चाहिए। और जब कोई किसी अपने बराबर को मिलता है तो उससे दोस्ती करनी चाहिए, और इससे फिर वो तीन जो भौतिक ताप हैं इनसे वो बाहर रहता है इस भौतिक जगत। The main context of this verse is spiritual advancement. So if it is written here that one should be very pleased by seeing those who are more qualified, it means what is the nature of this joy. The nature is that a person understands that because he or she can have association of a devotee who is more qualified, then I am joyful because now it is my chance to get to know more, to grow spiritually by implementing this knowledge in practice. तो जैसा कि इधर दिया गया है कि जब हम किसी मोर क्वालिफाइड व्यक्ति से मिलते हैं, मोर क्वालिफाइड भक्त से मिलते हैं, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। तो इसके पीछे का भाव कुछ इस प्रकार है कि हमको देखना चाहिए, कि हमको जानना चाहिए उस समय कि वो हमसे अग्रज भक्त हैं, तो हमें उनका संग लेने का मौका मिलेगा और हमें भक्ति और ग्रहण करने का मौका मिलेगा। So this position of a disciple is very important. We learn this world in which we live is like a school, and we can take lessons from everywhere and anywhere, not only from our own spiritual master. Other devotees also can
teach us. Those who are senior, they can do it, and some of them can. Some of devotees can teach by their own example, not just by saying words, but by their own example. It depends on us. Do we want to take these lessons or not? तो ये एक स्कूल की तरह ही है कि जैसे हम स्कूल में हम सिर्फ टीचर से ही नहीं बाकी सबसे भी सीखते हैं, तो इसी प्रकार हम इस ISKCON की सोसाइटी में ही सिर्फ अपने स्पिरिचुअल मास्टर से नहीं, आध्यात्मिक गुरु से ही नहीं, बल्कि बाकी भक्तगणों और उनके जो भी स्वभाव है उनसे भी हम काफी सारी शिक्षाएं लेते हैं. बस हमको शिक्षा लेने वाला बनना चाहिए. Because maybe you remember last time when we were discussing this level of Shraddha, and we were discussing this transition from Shraddha to Sadhusanga. I told you that there is a crisis, spiritual crisis in Krishna consciousness. Because of this crisis, it is not that everyone can progress to the Sadhusanga level. And this crisis means what? This crisis means that person doesn't have a desire to give his minute independence in the hands of spiritual authority. तो जैसा कि प्रभु जी ने पिछली बार हमको बताया था श्रद्धा के बारे में कि जो श्रद्धा और साधु संग है, तो ये श्रद्धा साधु संग की तरफ तभी बढ़ता है, हर कोई इसको नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि एक जो स्वतंत्रता होती है वो हमको अपने गुरु को देनी होती है. तो इसमें वो होता है कि ट्रांजिशन होता है श्रद्धा से साधु संग की. So the difference between Shraddha and Sadhusanga, just let's remind ourselves about it, right? The difference is that when one is on the level of Shraddha, he just likes to listen spiritual message, and that's all. He takes pleasure from this. But Sadhusanga level means I not only listen to the message, but I also implement this message in my life, and I want to follow, and I like to follow. So this desire to follow is important. This desire to transform ourselves is important. Shraddha, it is just about taking pleasure from listening spiritual message. Okay, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम रिमाइंड करते हैं कि जो हमने पढ़ा था श्रद्धा और साधु संग के डिफरेंस के बारे में. तो श्रद्धा कुछ ऐसी होती है कि हम जो भक्त होते हैं वो सुनकर ही इसमें आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन साधु संग होता है कि जब वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की इच्छा रखते हैं. So it is quite natural to follow these three patterns of behavior, I would say, right? It is quite natural to follow these instructions that are written here in this verse from Srimad Bhagavatam when one has this mood of disciple, when one understands that this world is like a school. तो ये कुछ 3 पैरामीटर्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं एक भक्त होने के नाते. जैसे कि एक स्कूल में कुछ चीजें होती हैं फॉलो करने के लिए, वैसे हम इधर भी कुछ ये 3 चीजें जो दी गई हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं. If one understands that it is school and all of us we are going through this educational process, which is goes under guidance of Supreme Personality of Godhead and his representatives, and all of us were on different levels, then it would be natural that we will be trying to help those who are less qualified, and we will be hankering to get help from those who are more qualified. तो अगर हम ये मान के चलें कि ये जो हमारी ISKCON सोसाइटी है एक स्कूल की तरह है, एक विद्यालय की तरह है, और ये संरक्षण में काम कर रही है भगवान श्री कृष्ण के, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमसे लेस क्वालिफाइड है तो उनकी हम मदद कर सकते हैं, और जो हमसे हाईली क्वालिफाइड है उनसे हम सीख सकते हैं कि हमको कैसे अपनी भक्ति में आगे बढ़. And if someone is equal to us,
then we should just make friendship. It means that we should discuss some spiritual subject matters. We should, in this way, we should inspire ourselves instead of speaking, of telling some prajalpa, which distracts us from spiritual life. तो और जो भी हमारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उनसे हमें मित्रता करनी चाहिए, उनसे हमको डिस्कस करना चाहिए स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, और हमको प्रजल्पा पे नहीं फंसना चाहिए. This mentality that the world around us is like school, and we have time, we have some energy, we have this consciousness, and we want to put our energy in our spiritual advancement, and we want to absorb our consciousness and spiritual life, and we don't want to waste time on some useless activities. We want to engage this time in spiritual life. तो ये जो मानसिकता है कि हमको ये एक तरह का स्कूल है और हमको उधर जाना है, हमको अच्छा संग लेना है, हमको किससे प्रजल्पा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो इस तरह की मेंटालिटी जो है ये हमको काफी लाभप्रद है हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. Okay, so and of course this mentality that I described, one can follow this mentality on regular basis in case if he himself is under spiritual guidance, because if one is under spiritual guidance, it makes one stable in his spiritual life. तो ये जो मेंटालिटी है कि हमको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, और अंडर स्पिरिचुअल गाइडेंस मतलब किसी के अंदर संरक्षण में काम करना चाहिए, किसी आध्यात्मिक संरक्षण में, ताकि हमारी जो प्रगति हो उसको चेक किया जा सके. So it means that when we begin our spiritual life, first we start from Shraddha. We just like to listen to spiritual subject matters, and then this sadhu sangha level goes, and of course this sadhu sangha level includes relationships between seniors, juniors, and equals. But when we begin spiritual life, our association with seniors are most important, because they are about to nourish us spiritually. तो जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए बहुत श्रद्धा से. जब हम साधु संघ की तरफ बढ़ते हैं, तो श्रद्धा से साधु संघ की तरफ बढ़ने पे, साधु संघ पे जब हम आते हैं, तो फिर हमें हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज भी मिलते हैं और लेस क्वालिफाइड डिवोटीज भी मिलते हैं और इक्वल से मिलते हैं. लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि जो हमसे अग्रगण्य जो भक्त हैं, हम उनका संग लें, ताकि क्योंकि वही हमारी भक्ति को उपजाऊ बनाएंगे, हमारे भक्ति रता बीज को उगाएंगे. And of course, because we try to purify our minds by chanting holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are trying to purify our minds with this chanting of holy names and following other devotional processes, but some habits can be still there. तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो धीरे धीरे हम अशुद्ध होते हैं, लेकिन तब भी कुछ आदतें होती हैं जो हमारी रह जाती हैं, संस्कार. So this purport, which is written by Srila Prabhupada, purport to this verse 4.8.34, describes this materialistic consciousness regarding the same three categories: equals, seniors, juniors. तो ये जो तात्पर्य है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, तो ये हमको बताता है कि उन तीन कैटेगरीज के बारे में, कि हाईली क्वालिफाइड, लेस क्वालिफाइड और इक्वल्स. And if one try to use this materialistic approach in his dealing with devotees, then he will create impediments in his spiritual life. तो अगर कोई भक्त इनको फॉलो करता है अच्छे से और इनको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में, तो काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे अपनी भक्ति.
That's why this verse from Bhagavatam 4:8-34 is really important, because Narada Muni gives their spiritual instructions, spiritual approach to these relationships, which is really differs from materialistic approach to relationships with other people. तो इसीलिए ये श्लोक का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि नारद मुनि जी इस श्लोक में हमें आध्यात्मिक आदेश दे रहे हैं कि हमको कैसे फॉलो करना चाहिए, और आध्यात्मिक आदेश क्योंकि डिफरेंट होता है किसी भौतिक नॉर्मल आदेश से। So in the purport, Srila Prabhupada writes, generally when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. When we find someone less qualified, we deride him. And when we find someone equal, we become very proud of our activities. These are the causes of all material tribulations. Means one creates these material tribulations for himself just by acting not in proper way. तो जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जब भी हमको कोई अपने से अग्रगण्य भक्त मिलते हैं तो हम उनसे जलने लगते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं उनके प्रति। कोई कम से कम क्वालिफाइड व्यक्ति मिलते हैं तो हम उनका निरादर करते हैं, और जब हमको कोई इक्वल मिलते हैं तो हम अपनी जो क्रियाएं हैं उनका दिखावा करते हैं। तो ये हमारे सारे कारण है कि हम भक्ति में उतनी प्रगति नहीं कर। So this statement that when we find someone equal, we become very proud of our activities. It means what? It means each and every of us, we have some achievements in our lives, and to become very proud in this particular case, it means that we try to prove to our equal that actually, my dear friend, I'm not equal to you. I am more qualified because I have such and such achievement. So just look on me. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जब जैसे कि इधर दिया गया है कि जब कोई हमारे बराबर के होते हैं तो हम उसमें गर्वित होते हैं। तो गर्वित का अर्थात ये है कि हम उनको कहना चाह रहे हैं कि हे मित्र, कि मैं तुमसे तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, मैं तुमसे ऊपर हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अचीवमेंट्स हैं वो तुमसे ज्यादा है। And of course, each and every of our actions has its consequences. It is called law of karma, and some karmic reactions we get next life or after few lives and so on. But if to speak about relationships with other people, it is we can get and we can feel the consequences of our actions quite easily and quickly. तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हम करते हैं, ये सारे हमारे पूर्व जन्मों के ही कर्म के अकॉर्डिंग है। तो वही हम आज करते हैं, और जो आज के कर्म है वो हम आगे जाके भुगतते हैं। तो इसी तरह जब हम अपने जो रिलेशनशिप है बाकी डिवोटी से उसको सुधारेंगे तो हमारी जो भक्ति है उसमें काफी फर्क पड़ेगा। It depends on our attitude, and in relation of that, I want to tell you one short story from Nagar Sankirtan that took place in Moscow on Arbat Street. It is one of the main streets in Moscow, Arbat Street. We perform Nagar Sankirtan on a regular basis on this Arbat Street. तो प्रभु जी अब कुछ शेयर करने वाले हैं एक स्टोरी नगर संकीर्तन की, और अरबक स्ट्रीट के नाम से वो जगह है मॉस्को में। तो प्रभु जी वहाँ संकीर्तन करते हैं, तो प्रभु जी अभी शेयर करें। And the story goes like this. It was in the beginning of 90s. The story was going like this. His Holiness Prabhavishnu Swami, that time he was Swami, Prabhavishnu Swami, he came to Moscow, and he was giving classes, public lectures, and kirtanas and so on. So he went to Arbat Street because the Nagar Sankirtan was scheduled for him. ओके, तो 90s की कुछ बात है, और प्रभावना स्वामी हैं वो Prabhavishnu Swami. ओके, प्रभविष्णु स्वामी हैं, तो वो उधर आए थे और वो कुछ पब्लिक लेक्चर्स देते थे, मतलब डिवोटीज को और बाकी पब्लिक को। तो उस टाइम पे उन्हें पता चला था कि इधर नगर संकीर्तन प्रोग्राम भी होता है अरबक स्ट्रीट।
And when devotees are new in Krishna conscious, it is quite common that they manifest some symptoms of fanaticism and so on. So before Prabhavishnu Maharaj came, one group of local Moscow devotees, they were performing Nagar Sankirtan with this conscious that all of these people who are on this Arbat street, they should be purified, and Mahamaya should be defeated, and we are right because our lifestyle is pure lifestyle, and they are sinful people who should be purified. तो जब प्रभु जी उधर संकीर्तन लेके जा रहे थे, तो जैसे कि हर नए डिवोटीज जब भी होते हैं तो उनका स्वभाव कुछ इस प्रकार होता है शुरू में कि वो जानते हैं कि अगर हम नगर संकीर्तन करेंगे तो जितने भी भौतिक जीव हैं उधर उनका सबका उद्धार होगा और महामाया जो है वो डिफीट हो जाएंगी, मतलब हार जाएंगी हमसे। और क्योंकि उधर की काफी ज्यादा पॉपुलेशन थी, मतलब उस टाइम पे तो पब्लिक ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो नगर संकीर्तन उधर करें। So it means that this Nagar Sankirtan was performed by this group of devotees not in friendly and joyful mood, but in mood of fight and fight and maybe arrogance also, arrogance. तो ये जो संकीर्तन था, इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बहुत उत्साहपूर्वक और आनंदमय संकीर्तन था, जबकि ये उस टाइम के हिसाब से एक अहंकार में कीर्तन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि ये उन डिवोटीज के उनका उद्धार करने के ऊपर थे, महामाया को हराने के लिए। And Prabhavishnu Maharaj came there and he saw this picture, how it was going on. This group of devotees, they were chanting Hare Krishna Mahamantra in very aggressive and bold way, and in the same way, this crowd, these people who were on the street, they were looking on devotees also in quite angry way. तो जो प्रभु विष्णु स्वामी हैं वहां पे, तो वो भी देख पा रहे थे कि जो डिवोटीज हैं वो काफी एंग्री मूड में, थोड़ा एरोगेंस मूड में वो संकीर्तन कर रहे हैं। तो और बाकी जो उधर पब्लिक इकट्ठी थी वो भी उनको ऐसा अनुभव कर पा रही थी कि वो किस प्रकार का संकीर्तन कर रहे हैं। And then, of course, when Maharaj came, it was his turn to lead the kirtan. So he started to lead the kirtan, and he was doing this in a joyful and friendly mood. And immediately, those people who were angry, they went somewhere, because it was the street, and people, each and every of these people, they had some idea where to go. They were just passing by. So they went somewhere, and another group of people joined those who also were joyful and friendly. तो जो महाराज हैं उन्होंने भी फिर कीर्तन करना प्रारंभ किया और काफी उत्साहपूर्वक और एक फ्रेंडली तरीके से उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। तो जो डिवोटीज थे, मतलब जो काफी पब्लिक थी जो इधर उधर से हम जा रहे थे, तो वो भी जो जब फ्रेंडली जो कर रहे थे महाराज उनके साथ हो रहे थे। So this how this world which is around us, how it works. It is like a mirror. We behave in particular way, and we get the response. We get a particular response according to our behavior. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक जो वर्ल्ड है ये एक मिरर की तरह है, कि जैसा भी हम रिस्पॉन्स, जैसा भी हमारी एक्टिविटी होंगी वैसा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। The same way, this recommendation given by Narada Muni, it goes according to this famous so-called golden rule of Jesus Christ. In New Testament, it is written this golden rule, and golden rule goes like, behave with others the way you want them to behave with you. Okay, so नारद मुनि जी भी यही, या नारद मुनि जो भी चीज बताते हैं ये
क्रिश्चियंस में भी ये काफी प्रचलित है। एक वो है कि जैसा भी हम व्यवहार करेंगे, मतलब जैसा भी हम व्यवहार उनसे चाहते हैं वैसा हमको व्यवहार करना चाहिए उनके लिए। So here in this purport, the recommendation is given further. Srila Prabhupada gives the instructions. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate toward him just to raise him to the proper standard. And when one meet an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. These important functions will make one happy within this material world. तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भी हमको कोई मोर क्वालिफाइड डिवोटी मिलते हैं तो हमको ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, हमको उनका संग लेने के लिए जाना चाहिए। और कोई हमको लेस क्वालिफाइड भक्त मिलते हैं तो हमको उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। कोई हमको इक्वल लेवल का मिलता है तो हमको उनकी एक्टिविटीज को भी सराहना देनी चाहिए। तो ऐसे जब हम अपना जो स्वभाव है कुछ इस प्रकार का रखेंगे तो हम हमारी भक्ति में काफी प्रगति होगी और हम इस भौतिक जगत में भी प्रसन्न रह सकते। And someone can wonder how it is possible. It is written here that by following these rules, one will become happy within this material world. How it is possible? It is said that no one can be happy in material world. Material world, it is not the place for happiness. तो जैसे कि इधर प्रभु आज में दिया हुआ है कि हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे इस भौतिक जगत में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम इस भौतिक जगत में खुश कैसे हो सकते हैं? And the answer is very simple. Maybe one will not be absolutely completely happy in material world, but his level of unhappiness will be decreased. Because of what? Because we ourselves we make ourselves unhappy by this improper behavior in relationships with others. We do something, then we get these reactions and it makes us unhappy. But if we act in knowledge, then at least there will be less reasons to be unhappy by getting the reactions of our misbehavior, or of misbehavior. तो जैसे कि तो इस प्रश्न का आंसर ये है कि हम हैप्पीनेस तो उतनी अटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो दुख है हम दुख को अवश्य कम कर पाएंगे, क्योंकि जैसा भी हमारा स्वभाव होगा, हमारे बिहेवियर जैसा भी होगा अपने रिलेशनशिप्स के साथ, तो वैसा ही हमको रेसिप्रोकेशन में भी मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर हमारा अच्छा बिहेवियर होगा, जैसे नारद मुनि ने जो बोला है, इसको हम फॉलो करेंगे तो हमें हमारे जो दुख का जो एक्सटेंट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। Hare Krishna. So we have one more verse from Sri Chaitanya Charitamrita which explains on what principles these Vaishnava relationships should be based in order that those who are in these relationships could be benefited the most. तो हम एक और चैतन्य चरितामृत से श्लोक कवर करेंगे, जिसमें हम बताया जा रहा है कि जो हम इस भक्ति प्रोग्राम में हैं तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए जिससे वो अपने रिलेशनशिप को और गहरा बना सके। Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22.131 Srimad Bhagavatarthanam Asvado Rasikaya Saha Sajatiya Shaye Snigdhe Sadhao Sangah Svatovare. So 3 aspects of Vaishnava relationships are mentioned here: Sajatiya, Snigdha, and Svatovare. तो ये जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.131, तो इस श्लोक में हमको तीन मेन चीजें कवर की गई है: सजातीया, स्निग्धे और साधु संग। And Svatovare. The last one is Svatovare. Svatovare.
Okay, so one should taste the meaning of Srimad Bhagavatam in the association of pure devotees, and one should associate with the devotees who are more advanced than oneself and who are endowed with a similar type of affection for the Lord. So here, this importance of association with senior devotees is emphasized. Of course, we should associate with everyone, but anyway, on each and every stage of our spiritual life, there should be some seniors, those who are beyond us, those who will help us. तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो अगर हमको श्रीमद् भागवतम का टेस्ट लेना है तो हमको भक्तों का संग लेना ही चाहिए। और प्रभु जी बता रहे हैं कि जो भक्तों का संग है, हमको भक्तों का संग लेना चाहिए, लेकिन हमको सीनियर डिवोटीज जो हैं उनका संग ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारी जो भक्ति है उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाए। And of course, again, let's go back to that verse from Srimad Bhagavatam given by Narada Muni. When we see these people who are more advanced, we should become joyful, we should not be envious. Otherwise, we will not get benefit from these relationships. तो जैसा कि हम पिछले श्लोक में जाएं, जो कि नारद मुनि जी ने कहा था, तो उसमें जो उसके इंस्ट्रक्शन थे कि जो भी हमको हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति मिले तो हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। So let's see the word by word translation. We have the word sajatiya. Sajatiya means similar. Similar means similar what? Similar type of affection for the Lord. It means sajatiya. तो सजातीय का अर्थ है एक समान। तो एक समान टाइप का जब हमारे भगवान के साथ अफेक्शन हो जाता है, भगवान के साथ संबंध हो जाता है, तो उसके बारे में इधर बताया गया। Then we have another word, snigdha, and it means advanced in devotional affection. तो हमारे पास एक और शब्द स्निग्ध है। तो स्निग्ध का अर्थ है कि जब हम भगवान के प्रति जो आसक्ति है उसमें अपनी एडवांसमेंट करते। And there is svatovare, and I will explain you what does it mean. So let's see what is written here in this purport regarding this verses. Well, well, there is no explanation. The explanation is in another verse. Anyway, I will explain anyway. So svajatiya means that there should be something common between those who are trying to be in these relationships, devotional relationships. It means that, well, it is natural when we get when we become closer with some people, when we develop relationships with other people, with devotees or even non-devotees, I mean the spirit of time when we were outside ISKCON, of course. When we develop these relationships, usually people are attracted to each other because they have something common in their nature. तो जैसा कि इधर सजातीय का बता रखा है, तो इस शब्द का अर्थ प्रभु जी ने कुछ इस प्रकार बताया कि जैसे जब हम ISKCON के बाहर होते हैं तो भी हम एकजुट होकर रहते हैं। तो जब भी हम एकजुट होकर रहने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चीज कॉमन। तो इसी वजह से ये सजातीय जो कि सिमिलर इसका अर्थ है, तो ये हम जान सकते। Sajatiya means that there are some common interests in devotional service. तो सजातीय का अर्थ है कि हमारे कुछ एक जैसे से ही इंटरेस्ट हैं भक्ति में। And it depends on level in devotional service, because level of consciousness, because you see in the translation, Srila Prabhupada writes that sajatiya means similar type of affection for the Lord, but mainly it is about those level of consciousness when devotees, they understand what type of affection for the Lord they have. It is mainly about Raganuga sadhana bhakti. तो ये जो सिमिलर टाइप ऑफ अफेक्शन इधर बताया गया है, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये एक रागनों का भक्ति के लेवल पे बताया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे भक्तों को पता चलता है कि उनके भगवान के साथ किस टाइप का अफेक्शन।
Sajatiya mainly means that people, devotees, they are, for example, they are attracted by a particular type of devotional service, kind of devotional service. For example, they like, both of them, they like to distribute Srila Prabhupada's books, or both of them, they like to serve deities, or both of them, they like common values, common understanding of something in devotional service. तो जैसे इधर सजातीय का अर्थ शायद से कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है कि कि जैसे सभी भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना काफी पसंद है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार करना और कीर्तन करना, तो ये सब टाइप के कुछ सिमिलर टाइप ऑफ अफेक्शन है जो कि उनका भगवान के साथ हो. Snigdha, advanced in devotional affection, it means that devotees, because they are soft-hearted, this soft-heartedness is manifested in their relationships. There is this softness, and because of this, these relationships are nectarian and affectionate, and so on. They are pleasing to those who are in these relationships. तो स्निग्ध शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार बताया गया है कि जब हम किसी से क्योंकि नॉर्मल भक्त का स्वभाव एक नम्र स्वभाव होता है, तो जब नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति का कोई भी रिलेशन होगा तो हमेशा नम्र ही होगा, वो बहुत अच्छा होगा, मधुर होगा. तो इस तरह से जब उसमें कोई एडवांसमेंट लेता है तो उसका और जो अफेक्शन होता है वो और ज्यादा अधिक उपजाऊ होता है, बढ़ता है. And of course, these relationships, they are sweet and nectarian, but these relationships related to Krishna. It is not that people, they gather and they have talks and other things, and they enjoy relationships with each other. No, it is all these relationships are about Supreme Lord Krishna and Srila Prabhupada and spiritual masters, how to please them, how to satisfy them. तो ये जो हमारे रिलेशन होते हैं आपस में, ये कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है, ये कुछ रिलेशन है जो कि संबंधित है भगवान के संबंध से और हमारे आध्यात्मिक गुरु के संबंध से. It requires qualification because when one starts his spiritual practice, it is not that his heart is pure and soft. There need of transformation, and because of this process of bhakti yoga, our hearts becomes more pure and softer and more soft. तो ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि हम भक्ति योग से पालन करके जब हम, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी भक्ति में और हमारा जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा और शुद्ध होता जाता है. It is actually one of the criteria, do we grow spiritually or not? We can try to measure our spiritual advancement. Devotees can try to measure their spiritual advancement by, for example, how many shlokas I know from sacred scriptures, or how many books are distributed, or how many plates of prasadam are distributed, and other criteria. But the main criteria are our taste for chanting holy names and the softness of the heart. The softness of the heart. And because of the softness of the heart, we are able, or devotees are able, or are not able to, or able to some extent to enter into this nectarian and healthy relationships with other devotees. तो जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभार हम जज करते हैं अपने आप को कि हम कैसे प्रकार के भक्त हैं, कि हमने प्रसादम कितना बांटा, हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी करी, हमने कितनी सेवा करी, लेकिन उसके जो मेन क्राइटेरिया है हमें चेक करने हैं कि हम कितने हमारी प्रगति हो रही है. वो कुछ इस प्रकार है कि हमारा जो संबंध है वो कितना ज्यादा मधुर है, मतलब कितने हम नम्र स्वभाव के हैं. ये चेक करने से हम पता लगा पाते हैं कि हम किस प्रकार के भक्त. Of course, I'm not saying that it is not important to distribute prasadam or to distribute books. I just want to say that if one has these qualities, it will be easier for him and more pleasant for those people who will get the books or prasadam from these devotees. It will be more pleasing for both of them. तो प्रभु जी किसी को मना नहीं कर रहे कि आप प्रसादम ना बांटें, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना करें,
बस प्रभु जी कह रहे हैं कि ये काफी अच्छा होगा अगर हम इन दोनों को साथ में लेके चले, क्योंकि अगर नम्र स्वभाव भी होगा तो उनका जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसादम है, उन सब में उनको काफी अच्छी रियलाइजेशंस मिलेगी. And svatovare, it means that in these relationships, devotees, they want one devotee wants another devotee to be benefited. हाँ, तो जो स्वतः वरे हैं, तो इसमें इसका अर्थ है कि जो डिवोटी हैं वो चाहते हैं कि जैसा वो अनुभव कर पा रहे हैं वैसा ही उसी एक्सटेंट में बाकी डिवोटीज भी अनुभव कर. It means this devotee care mood is there. तो एक तरह का उनका एक डिवोटी केयर जो मोड है, मतलब कि वो कैसे उनकी केयर करते हैं, ये एक इधर दर्शाता है. So using these three criteria, Sajatiya, Svatovare, and Snigdha, one can judge about the quality of his relationships with other devotees. तो जैसे कि ये 3 क्राइटेरिया हैं, सत्याजीता, स्वतःवरे और Svajatiya, Snigdha, Svatovare. सत्याजीता, स्निग्धा, Svajatiya. स्वजातीया, Uh-huh. स्निग्धा एंड स्वतःवरे, ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं अपनी भक्ति में प्रगति. Okay, Hare Krishna, thank you very much for your attention. If you have some questions, let's discuss it. तो प्रभु जी, अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं हमसे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everything is clear, right? Yes, Prabhu. Okay, or we should wait for some time. What should we do? Prabhuji, I think everything is clear for them. Okay. Thank you very much, devotees. Hare Krishna. Okay, Hare Prabhuji. Krishna. Okay, तो प्रभु जी, आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सबने अटेंटिवली सुना. तो प्रभु जी, I want to ask that in other sessions, in the next upcoming sessions from you in our morning session, so we will be discussing more about these stages of bhakti. Yes, why not? Let's continue. I don't mind. What about you? Yes, Prabhuji, we are also curious to learn more about them. So, Prabhuji, how many stages of bhakti are there? Well, 9, but of course, it is not that I'm qualified to speak about all the stages. Some stages we can discuss. Okay, Prabhuji. But Prabhuji, I have heard that there are 64. What I've heard, 64 elements or of bhakti, components of bhakti, maybe. Yeah. What's But that? it is another classification. Okay, Prabhuji. 9 stages of bhakti, it means 9 stages of consciousness that one has when he practices devotional service. And 64 angas of bhakti, it means 64 ways how one can serve. It is different classifications. Oh, okay, thank you, Prabhuji. Hare Krishna, thank you very much. Okay, see you later. Hare Krishna. Okay, so we will thank Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna mantra. आप सभी म्यूट कर सकते हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Thank you very much, Prabhuji. So, okay, तो जी, तो टाइम हो चुका है, तो हम अपने सेशन को यहीं पे विराम करते हैं. और कुछ अनाउंसमेंट्स, जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कुछ अनाउंसमेंट्स हो तो फिर आप जानते हैं कि हमारे गीता सेशंस तो डेली चल ही रहे हैं, तो आप उन सेशंस को ज्वाइन करते रहिएगा. तो वो हमारे रेगुलरली होंगे, उनको कोई ब्रेक नहीं रहेगा. वो हमारे सैटरडे, संडे, मंडे टू फ्राइडे, मतलब हर दिन होंगे 7 पूरे वीक में. तो आप उनको ज्वाइन करते रहिएगा. हमारे मॉर्निंग सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा
और जैसे संडे को भी, कल भी हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होगा, आप जरूर से हमको अपना संग दीजिएगा। तो थैंक यू डिवोटीज फॉर गिविंग योर एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये सेशन यहीं पे विराम करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।